Okay, so in the previous lecture we started work energy and power. आज हमने जो है इसका एक क्विक रिकैप करना है. We need to go through all the concepts once again और फिर next topic की तरफ चलेंगे. So in work energy and power we discussed that whenever we are like dealing with this particular chapter तो हमें काफी इज्जत देनी होगी इस चैप्टर को, क्योंकि हमारे जो चीफ एग्जामिनर हैं उन्हें भाई को बहुत पसंद है ये चैप्टर. सो ही जस्ट लव्स इट. तो जब भी कभी वर्क एनर्जी एंड पावर की बात होगी इसके 4 to 5 MCQs कंफर्म है. एंड व्हाट एल्स इज कंफर्म एंड श्योर ओवर हियर इज कि पेपर 2 में एटलीस्ट 2 to 3 MCQ जो आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो लाजमी आएंगे. So if we talk about the first very concept over here, that is work. तो work ये कहता है कि हमारे पास जो भी फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पर उसको हम डायरेक्टली कंसीडर कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी डिस्टेंस. तो आपने बेसिकली ये मेक श्योर करना है कि जब भी कभी आप किसी भी जगह पर किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अगेंस्ट में कुछ डिस्टेंस कवर होना चाहिए एंड दैट डिस्टेंस शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. ऐसा ना हो कि आप फोर्स आगे लगा रहे हो और डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे. सो दैट इज नॉट द केस फॉर वर्क डन. वर्क डन में क्या है कि अगर आप फोर्स आगे लगा रहे हैं तो डिस्टेंस भी कहाँ मूव होना चाहिए, आगे की तरफ. तो डिस्टेंस आगे ही कवर होगा अगर फोर्स आगे लग रही है और डिस्टेंस ऊपर कवर होगा जब फोर्स ऊपर लग रही है. सो दैट इज व्हाट वर्क डन इज all about. Now the formula for work done was force times distance. ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में. प्लस जो इसका ऐसा यूनिट होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज जूल्स. जूल्स ही इसका ऐसा यूनिट है विच इज एग्जैक्टली द सेम एज एनर्जी. और आप इसका एक और ऐसा यूनिट भी ले सकते हैं विच इज न्यूटन मीटर. Now there were some examples of work done, like if you have the force in the right hand direction like over here and the distance is also in the same direction, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ एक work done perform कर लिया है. While in this particular case over here the force was towards the right hand side लेकिन हमारा distance downward side पर था. So in this particular case आपने कोई work done perform नहीं किया है. Now moving forward we have our next topic which is energy. अब एनर्जी में काफी गंदगी हो चुकी है बट आई एम श्योर आप लोगों को प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स याद होंगे. तो मैं जल्दी से इसका एक क्विक रिव्यू ले लेता हूँ. डिटेल्स काफी सारी लिखी हुई हैं. तो एनर्जी जो है वो बेसिकली किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटी है उसको कहा जाता है. लाइक माई एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क, टू डू एनी वर्क, दैट इज व्हाट एनर्जी इज. नाउ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स. And we have got different forms of energies, like different types of energies होती हैं हमारे पास. The first one is kinetic energy, which is present in moving bodies. While the kinetic energy has got some practical life examples as well, like we have turbine, running buoy, or some running object. All of them will have kinetic energy. While the formula for kinetic energy is Ke is equals to 1/2 mv square. तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है. द इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि m किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय v, v इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड. तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि v की जगह आप वॉल्यूम कंसीडर कर लें और फिर क्वेश्चन में वॉल्यूम ढूंढते रहें. तो वॉल्यूम नहीं है, ये स्पीड है. Now moving forward we have our second form which is potential energy. Potential energy is basically the stored energy and it depends on multiple factors. तो हमारे पास दो types की होती हैं potential energy. The first one is gravitational potential and the second one is elastic potential. तो gravitational potential energy कौन सी है? It is the energy which is stored in any resting object. कोई भी object जब रेस्टिंग स्टेट में है और वो कुछ हाइट पर रखे हुए, इट इज रेस्टिंग एट सम हाइट, देन इट विल हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लाइक आप अपने रूम में कुछ भी चीज ऊपर देखें, जैसे ट्यूबलाइट है, लाइक अ ट्यूबलाइट और अ लाइट बल्ब, ऑल ऑफ देम आर इन अ रेस्टिंग स्टेट. वो स्टेशनरी स्टेट में है एंड दे आर एट सम हाइट. तो जब भी कोई चीज हाइट पर हो और रेस्टिंग स्टेट में हो
तो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंसीडर करते हैं. While in against of it, we have the other form of energy, which is potential elastic, like the elastic potential energy. That is also a stored energy, but that is only present in elastic bodies. जैसे rubber band हो गया, rubber हो गया, plastic हो गया. All of them are plastic bodies or elastic bodies. They will have elastic potential energy. नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल कहें या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहें, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, विच इज PE is equals to mgh right over here. So the m over here is representing mass, g is representing gravity and h is representing height. अब जल्दी से कोई मुझे बताए कि ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है. What is the value for gravity on earth? Can anyone of you tell me quickly? What is the value for gravity on earth? 9.8. Very good. And for moon it is 1.6. तो ये आपने याद रखना है. The gravity on earth is 9.8 and on moon it is 1.6. Now moving forward, we have some practical life examples of potential energy. So you could say that the water in reservoir will have potential energy as well as the resting bodies. कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्टिंग स्टेट में है और किसी हाइट पर रखे हुए है, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट थर्मल, सो थर्मल एनर्जी इज प्रेजेंट इन हीटेड बॉडीज. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हीट प्रेजेंट है उसमें थर्मल एनर्जी होगी. नाउ थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो गॉट like some sort of practical life examples like boiler, heater or the core of earth. Like आपकी जो earth's crust है, that has got a huge amount of magma and lava within it. So that is all formed due to the heat present inside the earth. earth के जो core है उसमें बहुत ज्यादा temperature होता है, and because of that temperature we have some thermal energy and that is producing some lava. तो लावा और मैग्मा जो एमिट होता है माउंटेन से, दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थ्स हीट, द हीट प्रेजेंट इनसाइड कोर ऑफ अर्थ. इसको हम जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव साउंड एनर्जी. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज पर आवर पेपर्स पर्सपेक्टिव एंड इट इज नॉट यूजुअली असेस्ड. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं आज तक इसके. तो साउंड एनर्जी बेसिकली like on the basic grounds is related to vibration, and whenever something is creating some sort of vibration, it is producing sound waves. It could be found in speakers as well as vocal cords. Then we have electrical energy, which is related to movement of charge. जब भी किसी कंडक्टिव वायर या कंडक्टिव मटेरियल में चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है. Now we have some general examples of electrical energy productions. So we have got generators and we have got wind turbines. Wind turbines, generators are the ones which are having electrical energy. Then we have chemical energy, which is related to chemicals. तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम केमिकल एनर्जी से रिलेट करते हैं. Like the human body has got nutrients, has got minerals, so those minerals and those nutrients create chemical energy. उस chemical energy को फिर हम दूसरे टास्क परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. Now we have same concept with cells. जो आपकी बैटरीज या सेल्स होती हैं उनमें भी chemicals fixed होते हैं, like they are filled with chemicals. उनके अंदर chemicals भर दिए जाते हैं and those chemicals are used to produce electrical energy. वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं. देन वी हैव फ्यूल्स, जैसे आपका पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. तो आप फ्यूल को बर्न करते हो एंड दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट. दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट विद इन फ्यूल्स. द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी. The nuclear energy is basically related to atoms and it is present in atomic explosions,
the sun and different forms of stars. अब हमारे पास दो सब classifications थे. The first one was renewable, the other one was non-renewable. Renewable energies are the ones which can be reused and they can be generated again. Non-renewables को आप एक बार use करते हैं and they cannot be used again. While if we talk about their source supply, तो renewables are limitless, जबकि non-renewables limited storage में होते हैं. Now they have got different impacts on atmosphere as well. Like आपका जो atmosphere है उसके ऊपर renewable sources का बहुत गलत impact, like non-renewables का एक बहुत गलत impact पड़ता है, and they are extremely polluting to the atmosphere, the non-renewables. Well, if we talk about the renewables, they are non-pollutants and they do not cause any major harm to the atmosphere. You have got then some examples of renewable as well as non-renewables. अब आगे चलते हैं. We have got law of conservation of energy. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी कभी आप एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना चाहिए कि मैं एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूँ. आई एम कन्वर्टिंग एनर्जी, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग इट एंड आई एम नॉट डिस्ट्रॉइंग इट ईदर. मैं कभी भी उसे ना तो फॉर्मुलेट कर रहा हूँ ना ही डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ. आई जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर. नाउ if we talk about a plant, it will have some heat from sun that is being used to grow the plant. जब वो plant grow हो जाता है, it is being eaten by the animal and the animal is then being eaten by human being. तो ये complete cycle है of energy transformation जो continuously चलता रहता है. Then we had some practical life examples as well as some past paper questions. तो hydroelectric power plant और thermal power plant की हमने examples की थी. I'm not going into the details of it. Then we have power. Power was basically the energy that is consumed or transferred per unit time. आप एक certain amount of time में कितनी energy consume करते हो उसको हम power से relate करते हैं. So power is when you are consuming or transmitting some sort of energy in a particular amount of time. Then power has got its SI unit which is watt और जूल्स पर सेकंड. जूल्स पर सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज वॉट. देन पावर हैज गॉट अ फॉर्मूला व्हिच इज एनर्जी ओवर टाइम और वर्क डन ओवर टाइम. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर लास्ट टॉपिक व्हिच इज एफिशिएंसी. बट बिफोर स्टार्टिंग एफिशिएंसी, कैन यू प्लीज ऑल कंफर्म इफ दिस chapter is perfectly clear until here? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या इसमें कोई क्यूरी है? Do you have any sort of query in here? Okay. So now starting up with the next concept which is efficiency. Efficiency is basically the rate of conversion of output to the input. Like आप कितना यूजफुल कन्वर्जन जनरेट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज द एफिशिएंसी. सो इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. नाउ द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी इज output over input times 100. जितना भी आप आउटपुट जनरेट करते हो उसको आप न्यूमरेटर में रखते हो और जितनी भी आपको एनर्जी सप्लाई हुई थी या पावर सप्लाई हुई थी उसको आप डिनोमिनेटर में रखते हो एंड देन यू मल्टीप्लाई दैट विद 100. तो एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी, बट दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव वन अदर रिलेशन इन एफिशिएंसी which is that input is always equal to the sum of output and waste. So it would be output plus waste. Now, moving forward, we have a very tricky set of questions related to efficiency. तो हम 3 से 4 MCQs और कुछ particular theory के questions past paper से practice कर लेते हैं for efficiency to have a better grip on the topic. Now, starting up, we have
a particular question that was related to MCQs, लेकिन हम यहाँ पर directly करेंगे like theoretically. So it said that a motor was having a wastage of 20%. Find the output if it is supplied with 8,000 watts. Now the problem over here is कि इन्होंने हमें एक certain amount of waste बता दिया है, but we are not sure कि हमारा output कितना है या efficiency कितनी है. Now the point here is कि हमें output की value भी नहीं पता, लेकिन हमें input बता दिया गया है. So we are known with the input and we are also known to the amount of wastage. तो अब मैंने आपको ये बताया कि efficiency में हमारे पास दो formulas होते हैं. The first one is output over input times 100 and the second one is input is equals to output plus waste. ये दोनों formulas आपने याद करने हैं और ये perfectly याद होने चाहिए आपको. अब इसमें जो सेकंड फार्मूला है उसको याद करने की वैसे जरूरत नहीं होगी. इट इज जस्ट रिलेटेड टू कॉमन सेंस. लेट्स से इफ आई वाज प्रोवाइडेड विद 150 रुपीज, मुझे अम्मी ने 150 रुपीज दिए एंड शी टोल्ड मी दैट आई नीड टू ब्रिंग लेट्स से 100 रुपीज ऑफ वेजिटेबल. सो आई वेंट ऑन टू बाय 100 रुपीज फॉर वेजिटेबल. The rest of the money is going into my pocket. तो जो मेरे पॉकेट में चला जाएगा that would be the wastage of my mother. So basically the wastage in this particular case is going to be 50. तो हमें पता ही ये चला कि जब भी आप आउटपुट और वेस्ट को कंबाइन करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? इनपुट के बराबर हो जाएगा. So the second formula is just related to common sense. आप चाहें तो इसको याद कर लें और चाहें तो स्किप कर दें. That's completely on you. Now, coming back to our past paper question, हमारे पास query ये है that we have been provided with 20% of wastage with input of 8,000 watts. तो कोई मुझे जल्दी से बता सकता है कि what is going to be the useful output percentage? यहाँ पर waste कर रहा हूँ मैं 20%. तो useful percentage कितनी होगी? What is going to be the useful percentage? Any guess? कोई टेंशन नहीं है, तुक्के लगा लें. 80%. एग्जैक्टली. तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. एंड बेसिकली द मशीन वाज वेस्टिंग 20% ऑफ इट्स इनपुट. तो ये यूजफुल कितना आउटपुट दे रही होगी? 80%. एंड द यूजफुल परसेंटेज इज आल्सो कंसीडर्ड एज एफिशिएंसी. तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है एज 80%. द फॉर्मूला वाज आउटपुट ओवर इनपुट टाइम्स 100. अब जल्दी जल्दी मुझे वैल्यूज बतानी है आप लोगों ने. एफिशिएंसी हैज बीन प्रोवाइडेड एज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी? क्विकली ऑल ऑफ यू. एफिशिएंसी की परसेंटेज हमारे पास आ गई है 80. नाउ वी नीड टू फिगर आउट आउटपुट. तो हम आउटपुट को रख लेंगे एज एक्स. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट वाज द इनपुट? व्हाट वाज द इनपुट वैल्यू? If you see over here, we have been provided with input as 8,000. तो हमारे पास input given है as 8,000. Now we need to multiply this with 100 और हमारे पास x की जो वैल्यू है वो फाइनल आंसर में आ जाएगी. So we'll take 8,000 to the other side. It will be multiplied. Then x would be multiplied with 100. So this is going to be 100x. Now you need to just multiply 8,000 with 80 and tell me the answer. 8,000 times 80. No, it's 8,000. Check you're working correctly, Husna.
Okay. So this is going to be 64,000,000 equals to 100x. Then 100 is being multiplied over here. जब आप इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. So this is going to be 64,000,000 divided by 100 equals to x. And the answer turns out to be 6,400 watts. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आउटपुट में यूनिट कौन सा लिखना है? तो आप वापस क्वेश्चन की तरफ आएंगे और देखेंगे कि आपको इनपुट किस यूनिट के साथ गिवन है. द सप्लाइड फॉर्म वाज इन वॉट्स. आपकी जो सप्लाइड फॉर्म है वो वॉट्स में थी, तो आपका फाइनल आंसर भी वॉट्स में ही होगा. एम आई परफेक्टली क्लियर या इसमें कोई क्यूरी है? I need to hear from all of you. Is it perfectly clear or do you have any sort of query? Okay, I'll repeat this again. So what happens over here is कि हमारे पास एक machine है which is wasting about 20% and the input was 8,000 watts. So since the wastage or the lost energy was 20%, the useful or the consumed energy is 80%. तो 20% आपने वेस्ट कर दिया, तो यूजफुल आपका कितना रह गया परसेंटेज? 80. यूजफुल परसेंटेज को आप नाम देते हो एज एफिशिएंसी और एफिशिएंसी परसेंटेज. तो अब एफिशिएंसी परसेंटेज आ गई है आपके पास. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 8,000 वॉट्स एज योर इनपुट. तो अब इनपुट है मेरे पास. I've got the efficiency. I'll just put in the values and solve it with respect to x. x को सॉल्व करने के लिए हमने इसे सॉर्ट आउट करना है and we will have our final answer. So Meena, is it now clear to you? Perfect. So now we are moving on to a similar past paper question in which they are saying that Ali is playing cricket at an efficiency of 60%. He is generating 2,000 watts. Find the input energy or the input power. Now the question is very straight. अली भाई जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वो जनरेटर का काम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. ही इज जनरेटिंग सम पावर. तो अगर अली भाई के घर में इलेक्ट्रिकल पावर आउट्स होते हैं तो ये अपने घर में बिजली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ही कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ही इज जनरेटिंग 2,000 वॉट्स. नाउ द एफिशिएंसी वाज 60%. The efficient output or the useful output was 2,000. We just need to figure out the input power. अब इस क्वेश्चन में मुझे इनपुट पावर फिगर आउट करनी है और मुझे एफिशिएंसी प्रोवाइडेड है प्लस आउटपुट हैज आल्सो बीन गिवन. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट एंड इजी क्वेश्चन. आप सब इसको ट्राई करें एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. यू ऑल नीड टू सॉल्व दिस क्विकली. Yes, has any one of you got the answer? Okay, so we have the answer as 3,333. Rest of you also solve this and see what your answer comes out. We have the first answer as 3,333. बाकी सब भी सॉल्व करके अपने अपने आंसर्स बताएं क्विकली.
Okay, so most of you like are getting the same answer, so we'll just leave it till here. Next question की तरफ आ जाते हैं. In the next question, they are saying, let's see now, played basketball. And created a waste of 800 joules. Find the efficiency if input was 2000 joules. So in this particular case, we need to figure out the efficiency. We have been provided with the input, which is 2000 joules, and the waste, which is 800. तो अब मुझे ये sort out करना है और efficiency figure out करनी है. इसको try करें और देखें if it's possible for you people. Otherwise, I'll do this for you. Quickly, all of you need to solve this. Okay, so we have the first answer as 40. The other one is 140. Okay, then we have 60. सबके आंसर्स अलग आ रहे हैं. Minha, have you solved it? Okay, let me just do this and see how it goes. So it's basically input equals to output plus waste. The input has been given as 2000. Output is unknown while the waste was 800. तो हमने output figure out करना है इस particular case में सबसे पहले, which is going to be 1200. Now, the efficiency is basically output over input times 100. तो आपके पास output है 1200 while the input was 2000, and you need to multiply this with 100. So most of you are basically making an error over here. The problem is कि आप लोगों ने direct waste को ही divide कर दिया है by input. You don't need to do that. आप पहले output figure out करोगे. Once you are done with that, आपने फिर formula use करना है for efficiency. So the output was 2000. It was not 2800. If you see, it's 2000. The input is 2000 और wastage is 800. 2000 हमने supply किया, 800 waste हो गया. तो useful output कितना है हमारा? The useful output is going to be the difference. आप 2000 supply कर रहे हैं, 800 waste हो जाता है उसमें से. तो पीछे कितना रह जाएगा? What would be the left out value? Of course 1200. तो output 1200 है, input 2000 है, multiply करेंगे 100 से, and the answer is going to be 60%. So this is how you will get your efficiency. Now, we'll do one more similar question and then we'll move on to the next one. So Ali did a task and wasted 600 joules. While he was supplied with 1
8,000 joules. Find the efficiency. Now, we first need to understand the question. Over here, we have been provided with wastage. The wastage 600 and the input or the supplied energy was 8,000. I need to figure out the efficiency. तो अब इसे solve करें and let's see if you are able to do this or not. All of you. Solve it and tell me your final answers quickly. Okay, so we have the first answer as 92.5. Rest of you also tell me the answer. Okay, so you people are almost getting the same answer. I'll just solve this for you. The input was 8,000. The output is unknown and the wastage is 600. We'll take 600 to the other side. It would be subtracted and the output turns out to be 7,400. Okay, so the efficiency percentage is output over input times 100. The output is 7,400 while the input was 8,000. We'll multiply them with 100 and solve this out. तो आप इसे solve out करके जब आंसर निकालेंगे it is going to be 92.5. Perfect. So this is it. We are done with the questions of efficiency. अब हम चल रहे हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस पे. तो पास्ट पेपर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है विच इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. तो डिफरेंट पार्ट्स पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज यूज करनी होती हैं और टोटल एनर्जी के साथ इक्वेट करवाना होता है. तो एक क्वेश्चन करते हैं पास्ट पेपर का, उससे आपको जो चीजें हैं वो काफी बेहतर समझ में आ जाएंगी. So in past papers, we had a question where the train was moving up and down a slope. तो हिल पे ऊपर की तरफ जा रही थी ट्रेन and then it was moving back down again. And this process continued for 3 different hilltops. तो ये 3 different hills के लिए process continue हुआ. The point over here was कि हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा था that this train was having a mass of 5,000 kg and the height of the first hill was 70 meters. We need to figure out the potential energy at the top. हमें बिल्कुल टॉप पे जो potential energy है वो figure out करनी है. So we have been provided with height, we have been provided with mass. We need to figure out the potential energy. Can any one of you tell me what is the formula for potential energy? Potential energy का formula किसी को याद है? mgh. Very good. So the formula for potential energy is mgh. What is the value of m over here? Mass की value कितनी given है मुझे? The value for mass has been provided as 5,000. Gravity बताइए. What is the value for gravity? And of course the train is traveling on earth. ऐसा नहीं है कि मून पे ट्रैवल कर रही है. So the gravity of earth would be 9.8. Then can any one of you tell me what is the height? Height कितनी होगी यहाँ पर ट्रेन की? It is going to be 70. Very good. Now you need to multiply this and get your final answer. Husna and Mina Sajjad, you both need to solve this. मुझे अपने अपने आंसर्स बताएं quickly.
So we are having our answer as 3, 5 with probably 5 zeros, I guess. So this is what our final answer looks like. Now the point here is कि हमारे पास SI unit नहीं है यहाँ पे. So can anyone of you tell me what would be the SI unit of potential energy? Potential energy का SI unit क्या होगा? Yes, anyone has any clue? Energy का SI unit क्या होता है? Okay, so the SI unit of energy is basically considered as joules. तो हम joules consider करते हैं SI unit के लिए for energy, while for power the SI unit is watts. तो ये दोनों SI units आपने याद रखने हैं. Now we are moving further onto this same question. अब इन्होंने ये कहा that the same train was coming down from slope B. Slope B से same train नीचे की तरफ आ रही थी at a speed of maybe like 20 meter per second. It was coming down at a speed of 20 meter per second. We need to find the amount of potential energy stored in it. हमें यहाँ पे potential energy figure out करनी है. Now the point here is कि क्योंकि train travel कर रही है, it will have kinetic energy. The traveling train will have kinetic energy. So we first need to figure out the kinetic energy by the formula of kinetic energy, which is 1/2 mv squared. Can anyone of you tell me what is the mass of the train? Train का mass कितना है हमारे पास? The mass of the train. Can you see it from here? It was 5,000. Everyone needs to make sure that you are responding. Otherwise, you will not have any clue कि physics में क्या चल रहा है. Make sure to be attentive. Make sure to respond. So, all of you, respond to me. What is the mass of the train? What is the mass of the train? Quickly, 5,000. Now, moving forward, we have the speed of the train. So the train is traveling at a speed of 20. Now we have 20 over here. We will take the square. और अब हमने इसको sort out करना है and we need to figure out the answer for kinetic energy. Kinetic energy sort करके मुझे बताएं कितनी आ रही है. Tell me the final answer for kinetic energy quickly. Okay, so this is 100 with 3 more zeros, I guess. Okay, so we are having the kinetic energy as 100,000 joules. Now, okay, it was 6 zeros in fact, right? Now the point here is कि इन्होंने हमसे ये कहा कि ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है at a speed of 20 meter per second. How much of the energy is present in the form of potential? तो potential की स्टेट में कितनी एनर्जी मौजूद है ये फिगर आउट करना है. The total energy is to be considered as kinetic in this case, और फिर हमें subtract करवाना है from the first potential energy. तो जब ट्रेन नीचे आ रही है it will have kinetic and some other forms of energies. तो हमने क्या करना है, जो previous energy find की है उसमें से kinetic energy subtract करवा लेंगे. So we'll subtract both of them and we'll find the stored energy in this particular position. So hill B के end पे जो stored energy है वो figure out करने के लिए हमने इन दोनों energies को subtract करना है. So we will have 10,100,000 with 500,000. We just need to subtract that out and we will have 500,000 as our final answer. So this is how such questions are sorted out. Now, moving further,
हमारे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन है बट विद द एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट, तो उसे जरा आप ट्राई करें एंड लेट्स सी इफ यू पीपल आर एबल टू सॉल्व दैट और नॉट. So a boy threw a ball in air. The ball had a mass of 60 kg. Let's suppose the ball was having a mass of 60 kg and traveled at 5 meter per second. Find the height the ball could achieve. Okay, so the point over here is कि हमारे पास एक ball है. We have got a ball over here. We are basically throwing this ball into the air. हम इसे air में throw करते हैं और फिर ये एक certain point पर जाकर रुक जाती है. It will stop at that particular point for a very small amount of time. बहुत छोटी duration के लिए ये ball वहाँ पे रुक जाएगी. So at that time it will only have potential energy. While when it was being thrown, it would only have kinetic energy in it. तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल. यहाँ पर दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज नहीं है. वी हैव गॉट वन सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी एट अ टाइम. व्हेन इट वाज ट्रैवलिंग अप इट वाज हैविंग काइनेटिक. जब ये टॉप पे पहुंच जाएगी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट वी फर्स्ट नीड टू फिगर आउट काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी फिगर आउट करने के लिए मुझे फॉर्मूला गिवन है पहले से, जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, विच इज 1/2 mv². अब जल्दी से मुझे काइनेटिक एनर्जी सॉर्ट करके बताएं व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस क्विकली. Yeah, have you calculated what is the value of kinetic energy? $750. Perfect. Now the potential energy is going to be considered as exactly same. हम potential energy को भी exactly same consider करेंगे by the law of conservation of energy. So the potential energy is 750 as well. Potential energy का हमारे पास formula है as mgh. The formula for potential energy is mgh. We have the potential energy, we have the mass, gravity हमें याद है 9.8. We just need to solve this for height. तो हमें height find करनी है. We have potential energy as 750, the mass is 60 kg and the gravity is 9.8. Quickly tell me the value of height. What is going to be the height in this particular case? Okay, so we have got our answer as 1.27 and we have got another answer as 12.5. आपने बेसिकली करना ऐसे है कि आप 750 को पकड़ेंगे, यू विल डिवाइड इट विद 60. 9.8 अपनी जगह पे रहेगा. वंस यू आर डन विद दैट फिर आपने इसको फर्दर डिवाइड करना है. So over here you will have your answer as 12.5, then divided with 9.8 again, and you will gain your answer for height. So this is going to be 1.2 something, I guess. Now the answer for height has been provided as 1.2. अब प्रॉब्लम ये है कि हाइट के साथ हम SI यूनिट कौन सा रखेंगे? What would be the SI unit with height? So the SI unit with height is going to be meters.
तो हाइट के साथ हमने मीटर्स को कंसीडर करना है. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज कि हमारे पास जो बॉल थी दैट वाज बीइंग थ्रोन इन एयर एंड इट रीच्ड सम स्पेसिफिक हाइट. वी वर जस्ट इन सर्च ऑफ दैट हाइट. तो हमारे पास हाइट आ गई है as 1.27 meters. So this is what this question was all about. We are done with all of the concepts of work, energy and power. I hope this is perfectly clear. Now the past papers and the recording would be shared with you people in the group. और अगर कोई क्यूरी होती है इसमें पास्ट पेपर सॉल्व करने के लिए या किसी और तरीके से, just feel free to text me whether in the group or via the private chat over WhatsApp. So we'll keep it till here. Next class में इंशाल्लाह हमने next chapter शुरू करना है, which is going to be moments, turning effect of force. इंशाल्लाह हम start करेंगे coming class में. So see you then on Sunday. That's it for today. Take care. Allah Hafiz.